नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 NISM IFSCA सीरीज़ 1 एग्ज़ाम का कवर करेंगे। इसमें हम स्केड्यूल ऑफेंसेस के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को मैंने इस बार कम रखा है क्योंकि इसमें बहुत मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन कौन सा है, उसका लॉ क्या है। तो कई बार ना ये सब इन डिटेल आप करने जाओगे तो दिक्कत आएगी। इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा जो NISM की वर्कबुक है उसमें से आप याद कर ले। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये वर्क करता है और चैप्टर 4 एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पूरे चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? So, after a comprehensive study of this chapter, you should be able to identify and define schedule offences as described under Indian Penal Code (IPC) and Bharatiya Nyaya Samhita (BNS) 2023. Understand the legal requirements for initiating proceedings under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Differentiate between Part A, Part B, and Part C of PMLA schedule based on their legal nature and monetary thresholds. सो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस कवर करते हैं। इन अ लीगल टर्मिनोलॉजी द टर्म ऑफेंस इज डिफाइंड सिंपली एज अ क्राइम और अ इलीगल एक्शन। हाउएवर within a specialized framework of PMLA the definition is much more structured। देखिए, ऑफेंस का मीनिंग क्या है? अ क्राइम और अ लीगल इलीगल एक्शन। सो अब देखते हैं लीगल प्रीकंडीशंस फॉर PMLA प्रोसीडिंग क्या है। टू प्रोसीड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और एंटिटी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन कंडीशन मस्ट बी मेट। सो द फर्स्ट इज commission of schedule offense. An offense as defined under section 21Y must have been committed. These offenses are specifically listed in part A, B, and C of schedule of PMLA 2002. Generation of proceeds. The commission of that schedule offense must have resulted in generation of proceed of crime. अब हम जाते हैं द रोल ऑफ schedule offense. A schedule offense serves as the mandatory foundation for money laundering charge. The offense of money laundering itself arises directly from the criminal activity committed in relation to these schedule offenses. According to Section 21Y of Act, schedule offences refer to any type of property or asset that are either derived from proceeds of crime, used in commission of crime in relation to schedule offences. Furthermore, the PMLA clarifies that the activity connected to crime, such as concealment, possession, or use, is continuing activity. It continues as long as person is directly or indirectly enjoying these proceeds of or projecting them as untitled property. The three parts of schedule offense. The PMLA schedule is categorized into three distinct parts based on type of legislation and financial value involved. इसका पार्ट 1 ये है एक्सक्यूटिव क्रिमिनल लिस्ट। अब पार्ट ए contains an exhaustive list of offences drawn from numerous criminal legislation in India. A defining characteristic of Part A is that there is no monetary threshold. Proceeding can be initiated regardless of amount of involvement. Key legislation under Part A includes Bharatiya Nyaya Samhita 2023, formerly the Indian Penal Code 1860, Narcotics, Drug and Psychotic Substances NDPS Act 1985, Unlawful Activities Prevention Act 1967, Arms Act 1959, Prevention of Corruption Act 1988, Information Technology Act 2000,
Wildlife Protection Act 1972, Copyright Act 1957 and Trademark Act 1999. Part B is the monetary threshold list. Part B encompasses offences under Indian tax laws, most notably the Customs Act 1962. Unlike Part A, these offences only fall within the purview of PMLA if they meet a specific financial limit. Threshold: the total value involved in these offences must be 1 crore rupee or more. Part C: cross border implications. Part C targets offences that have international or cross border dimensions. It specifies that any offence mentioned in Part A that has cross border implications is covered. The Black Money, Undisclosed Foreign Income and Asset and Imposition of Tax Act 2015 specifically willful attempt to evade tax penalty or interest under section 51 of this act are included. There is no monetary threshold provided for part C offenses. डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ स्केड्यूल ऑफेंसेस टेबल। देखिए दोस्तों, ये पूरा टेबल दिया हुआ है ये ऑफेंसेस का। ये आप NISM की जो वर्कबुक है इसमें से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डिस्कस करने का इतना मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 4। आने वाले वीडियो में हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे।